हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू टॉपिक ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अभी तक हमने ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में पढ़ा है एंड इन दिस स्टडी वी हैड अ इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑफ ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू वी इफ वी हैव एन एल सेट देन वी कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म दिस एल सेट इनटू एन ऑर्थोगोनल सेट एंड फर्दर इनटू एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ओके. Before going to the definition of orthogonal complement, let me tell you an important and the tricky part of this orthogonal complement. जब भी हम किसी वेक्टर स्पेस के किसी एस एक सबसेट को कंसिडर करते हैं वेदर दिस सेट एस इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी देन वी कैन ऑलवेज थिंक अबाउट स्पेन ऑफ दिस सेट एस. ओके. एंड वी आर श्योर कि जब भी आप किसी भी सेट का स्पैन लेते हैं दैट इज ऑलवेज contained in V, and more precisely this span of S is a subspace of V. This is the important thing. Okay. यही similar concept we will have in orthogonal complement. That is, if you have a non-empty set, here we are distinguish the emptiness. So if we have a non-empty set S which is not equal to 5 contained in V, then if you choose the S complement, okay, तो इस S complement में वो सारे एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V के जो S के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल है. That means you are collecting all the elements from the vector space V whose inner product with every element of the set S is equal to 0. ओके. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है एस कॉम्प्लीमेंट दिस इज ऑल्सो कंटेंट इन वी एंड दी फर्दर वी हैव दिस एस कॉम्प्लीमेंट इज अ सब स्पेस ऑफ वी. ओके. तो जब आपने स्पैन पढ़ा था तब सब स्पेस का एक ऑब्वियस कंसेप्ट आया था एंड नाउ and at this time if you are having the concept of orthogonal complement then we have an obvious discussion of subspace of V. So these two are the obvious subspace in the whole linear algebra. Okay. Now let us discuss and the definition of orthogonal complement. Definition, and this definition defines orthogonal complement. So let S be a non-empty set in V. Okay. Then the orthogonal complement of S denoted as S prime as orthogonal is the set that contains all vectors in V that are orthogonal to every vector in S. That is, S complement is equals to we are collecting all the element x from V for which inner product of x with y is equals to 0 for all y in S. So आप S के हर एक एलिमेंट के साथ V के उन एलिमेंट को कंसिडर करेंगे जिनके लिए इनर प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है. ठीक है. और ऐसे सभी x का कलेक्शन ही S कॉम्प्लीमेंट है. Now let us determine some simple kind of complements. So example number 8. So what about the complement of zero vector space? So if you identify 0 complement, then from the definition we are collecting all x from V such that
0 time x is equal to 0. Since we have the singleton element and we have considered that element, so we are not writing for all something something. Okay, so हमें वो सारे x कंसिडर करने हैं जिसका 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आता है, और हमें पता है कि अगर V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हमेशा इस V के हर एक एलिमेंट के साथ 0 का इनर प्रोडक्ट 0 ही आएगा। एंड वी नो इस तरीके के x हमेशा हर एक V के मेंबर होंगे, तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट V ही बन जाएगा। Now, if you want to identify the complement of V, that means you are collecting x from V such that x comma y inner product is equals to 0 for all y belongs to V। और ये तो डेफिनेशन ही है कि अगर V कोई इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो वो वेक्टर जिसका V के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है वो केवल 0 वेक्टर ही होगा। तो अगर हम वो वेक्टर कलेक्ट करें इसके अंदर, अगर वो वेक्टर कलेक्ट करें जिसका V के हर एक मेंबर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दैट विल बी दी 0 स्पेस ओनली। Okay, so this is how you can determine the complement of 0 space and the vector space itself. Now let us discuss another example that deal with the space R cube. So consider the inner product space R cube. Okay, let S be the singleton set containing E3, and we know E3 is the 0 comma 0 comma 1 element. Okay, then we are asked then find S complement. Okay, so solution is quite simple, just always apply the definition only. Okay, so S complement by the definition will contains all the element x comma y comma z of kind from R cube, such that if you take the inner product with x comma y comma z comma e3 I'm writing it as 0 comma 0 comma 1, then it must be equals to 0, and this is the only element, so we will close our bracket. Now if you identify the inner product with these for these two vectors, then where you can have inner product of x comma y comma z with 0 comma 0 comma 1. So when the inner product is not mentioned, you can consider the standard inner product on the vector space. Okay, and the on R cube where the entries are real, you can consider the standard inner product is the dot product. So it will be x times 0 plus y times 0 plus z times 1, that is equals to 0, and this implies that z equals to 0. So our S complement is nothing but x comma y comma 0 in R cube, such that this x and y are coming from R. You know, if the third element is 0, then this is nothing but the R square, or you can say this is xy plane. Okay, so this is how you can identify the complement. Now let us proceed to prove an important statement in the form of theorem. So let me write the theorem 6.7, and this says suppose that our set S is equals to V1 V2 and so on Vk. So this is a set of cardinality K is an orthonormal set. Orthonormal set in an n-dimensional inner product space V. Okay, then we have the following one. The first part of this theorem says S can be extended to an orthonormal basis, and that basis is also given that V1 V2 and so on Vk
then vk plus 1, and so on vn. Okay, for v. So you can see the first k element are same as the element of s in the orthonormal basis when we extend this s to be an orthonormal basis. Then b part says if w is the span of our set s, then the set s1, that is equals to v k plus 1, v k plus 2, and so on v n. So you are collecting the elements except these first k element. Okay, so this s1 is an orthonormal basis for w complement. Then C part, that is from A and B, you can see यहाँ पर W का डायमेंशन K हो गया और W कॉम्प्लीमेंट का N माइनस K हो गया. So you can write this, the dimension is K plus N minus K. So K डायमेंशन हो गया W का और K N minus K हो गया W कॉम्प्लीमेंट का. So using this statement we can write if W is any subspace of V, then dimension of V is equals to, let me write this here only. Okay, then dimension of V is equals to dimension of W plus dimension of W complement. Okay, now we will prove the first part. The proofs are quite simple. So we will consider first A part, in which we are taking the extension of the set S to be an orthonormal basis for V. So this is quite simple use of Gram-Schmidt orthogonalization process. So let me write it in the point by point. So first, given that S, that is equals to V1, V2, and so on Vn. Sorry, this is Vk, is an orthonormal subset in V. So the moment we say this is an orthonormal set, इसका मतलब ये एक orthogonal set है और इसका हर एक element non zero है. And the moment you have an orthogonal set whose each element is non zero, you can conclude that that set is Li set. Okay, so S is an orthogonal set, ये हम प्रूफ कर चुके हैं. orthogonal set containing नॉन जीरो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट एक यूनिट वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर्स. ओके, therefore S is an Li set in V. एंड किसी भी वेक्टर स्पेस में अगर आपके पास Li सेट है तो आप इसको हमेशा एक्सटेंड कर सकते हैं V का बेसिस बनने के लिए. ओके, सो नाउ सिंस S is an Li subset of V, so by extension theorem for basis, we can extend S to be an ordered basis for V. Okay, so let after
extension, we obtain S prime that is equals to V1, V2 and so on, Vk, and we are having Wk plus 1, Wk plus 2 and so on, Wn. Okay, so we are adding these n minus k w's in the set S and the resultant set is S prime. Okay, अब क्योंकि हमारे पास एक एल आई सेट है तो जब भी हमारे पास एल आई सेट होगा हम ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं और इस प्रोसेस में वी हैव एन स्टेटमेंट दैट कि अगर let S is equals to V1, V2 and so on, Vn be an orthogonal set, okay, and let S prime is equals to W1, W2 and so on, Wn be an orthogonal set obtained after applying Gram-Schmidt process, then we must have that Vi is equals to Wi for all I. So this is an important statement for the Gram-Schmidt orthogonalization process. That means कि अगर आप किसी orthogonal set पर ही ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को अगर अप्लाई करेंगे देन वी विल हैव द सेम सेट, even not same set, they will same component wise as well. That means the first element will be equals to the first one, second will be equals to the second one and so on. Okay, so from the last discussion we have v2, v3 and vk up to vk, these are orthonormal and hence orthogonal elements, right? और जब हम इन एलिमेंट्स के लिए ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट सेट आएगा उसके फर्स्ट के एलिमेंट तो v1, v2, vk ही बने रहेंगे फ्रॉम दिस स्टेटमेंट. ओके, द चेंज विल बी इन दीज wi's. ओके, so since so you can write, so we have an li set S prime. Okay, so we have an li set S prime, hence we can apply Gram-Schmidt orthogonalization, that must be orthogonalization process to obtain an orthogonal set and we are calling this set as S double prime. Okay, orthogonal set S prime such that S double prime is equals to the first element will be same as the first k element will be same as the S prime, and then you can have I can write them as Wk minus 1 prime, then Wk plus 1. Okay, Wk plus 2 prime and so on. You can have Wk plus and that is Wn prime. Okay, so these are the elements which are in S double prime. और S double prime क्या है, एक ऑर्थोगोनल सेट है. यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट कहाँ यूज किया है कि ये Wk plus 1 prime is different from the Wk plus 1, but these first k element will be the same as the first entries in S prime. Okay, ये हम इस स्टेटमेंट से लिख पा रहे हैं. ठीक है, सो नाउ वी हैव एन ऑर्थोगोनल सेट
एंड वी नो दैट ईच एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों है? क्योंकि एस प्राइम जो सेट था जिसके अंदर इसी तरीके के एलिमेंट्स थे वो सभी नॉन जीरो थे, और उन नॉन जीरो से हमें ये नॉन जीरो सेट मिला है। नॉन जीरो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज नॉन जीरो। Now, since every element is non-zero, you can divide every element by its norm, and from the initial discussion v1 v2 vk, these all were orthonormal. These were all element of an orthonormal set. So v1 v2 vk all are orthogonal elements with the unit norm. इसका मतलब जब हम v1 को इसकी नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस v1 ही मिलेगा क्योंकि इसका नॉर्म 1 है। v2 को जब हम इसकी नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें वापस v2 ही मिलेगा क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, एंड सो ऑन वी के तक ये बात ट्रू है। सो द चेंज विल बी इन दीज एलिमेंट्स ओनली। ओके, सो in the next step, then from s double prime we can obtain an element, or we can obtain an set, we can obtain an orthonormal basis beta, that is equals to v1 v2 and so on vk. Then you have vk plus 1 vk plus 2 and so on, we have vn, orthonormal basis beta for v, where this vk plus 1 vk plus I is nothing but the wk plus I prime divided by norm of wk plus I प्राइम। तो हर एक वेक्टर को यहाँ से हर एक वेक्टर को इसकी नॉर्म से हमने डिवाइड कर दिया, और जो भी रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आ रहा है उसको हम हमारे इस बीटा में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, वेयर आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to k n minus k only. ठीक है, so these are n minus k vectors that are going to be added in the beta. So thus we can have an orthonormal basis from an orthonormal set. ठीक है, so can I write here, so like wise and li set in B and orthonormal subset in V can be extended to be an orthonormal basis for V, and this is the important part of this theorem.